1859 में इंग्लैंड में एक किताब पब्लिश हुई, नाम था ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। किताब के लेखक थे चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। डार्विन की इस किताब ने छपते ही पूरी दुनिया में ऐसा बवाल खड़ा कर दिया कि दुनिया जैसे दो हिस्सों में बंट गई। एक तरफ चर्च बाइबल की विचारधारा और उसकी मान्यताओं के समर्थक थे, और दूसरी तरफ थे लिबरल्स, जिन्हें चीजों को तार्किक दृष्टि से देखना ज्यादा पसंद था। धीरे धीरे आस्तिक बनाम नास्तिक में बदल चुकी इस लड़ाई पर पूरी दुनिया में डिबेट होने लगी। बहरहाल डार्विन की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन से एक चीज निकलकर सामने आई, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी कि बदलते हुए हालात में केवल वही सर्वाइव कर पाएगा जो अपने आप को परिस्थितियों के अनुसार ढाल ले। और जिस तेजी से आज दुनिया बदल रही है और हालात बदल रहे हैं, उतनी ही तेजी से नए स्किल्स और नई नॉलेज विकसित होते जा रहे हैं, और सर्वाइवल उतना ही मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन जिनके पास इस माहौल के लिए जरूरी स्किल्स हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंग्लिश कम्युनिकेशन भी एक ऐसा ही स्किल है जो हमें ऐसे माहौल में खुद को फिट करने में बड़ी हेल्प करता है। हेलो, हाय एंड वेलकम टू इंग्लिश विंग्लिश, द लैंग्वेज लर्निंग रूम ऑफ सक्सेस कैफे। यहाँ आपको मिलेगा बहुत सारा सपोर्ट, ढेर सारा अपनापन, थोड़ा सा मोटिवेशन और थोड़ी सी इंग्लिश, जिसे आप कई गुना अपने आप बढ़ाएंगे। In the last video, we talked about fluency and discussed about the things required for getting fluency. We also understood active and passive memory and discussed how we can develop a stronger connect with the world. We also talked about spending 10 minutes on reading. I hope आपने ये शुरू कर दिया होगा। अगर नहीं किया है तो कर दें, टाइम का एक्सक्यूज ना रखें, क्योंकि दुनिया को ऐसी ऐसी नायाब चीजें देने वालों के पास भी केवल 24 घंटे ही थे, और सभी के घंटे में केवल 60 मिनट थे। Remember, if we want to do something, we have determination. If we don't, we have excuses. The first golden line for today. If we want to do something, we have determination. If we don't, we have excuses. अगर हमें कुछ करना होता है तो हमारे पास इरादे होते हैं, और अगर नहीं करना होता है तो बहाने होते हैं। So simply watching these videos won't benefit you at all. So come on, be a little serious, get up and get started. Get up and get started, and that's the only way. अपने पिछले एपिसोड से हम वोकेबुलरी डेवलपमेंट पर बात कर रहे हैं। If language is a building, words are the bricks that make that building. And you cannot even think of a building without bricks. You don't know words, you don't know English. Researchers have found out that to understand a conversation or a written text, you need to know 90 to 95% of the used words. So roughly, if you know 2000 high frequency words, you will be fairly comfortable. Even if you are in a typical conversation with a native speaker, it will equate to knowing the 3000 most frequent English words. I want to share with you that I have made a list of around 1800 high frequency words, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन वर्ड्स का ऑर्डर उनकी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से ही रखा गया है। That means जो वर्ड सबसे ज्यादा बार यूज होता है उसे पहले नंबर पर रखा गया है। So the first 25 words in the list make about 30% of the printed or spoken English. The first 100 words make around 50%, and the first 300 words make roughly 60% of it. And in the next video I am going to show you those words. और अगर आपको इन 300 वर्ड्स को ठीक से बोलना और इनका सही यूज आ गया तो बहुत कम समय में ही आप इंग्लिश लैंग्वेज के एक बहुत बड़े माइलस्टोन को पार कर लेंगे। Last episode we talked about reading a newspaper or a magazine to increase your vocabulary. Here are a few suggestions that would help you to read more effectively and increase your vocabulary. The first one, read the headlines and mark the words with a pencil or a pen you like more than others. Now pick up some news items that you have marked and
read them. Try to understand the meaning of the lines. But even if you don't understand anything out of it, don't worry. It's a very, very natural process. So just relax. Next point is, when you read, you will come across words that you have heard. You know these words, but you don't know the meaning of these words. Mark these words. Now, go to the editorial page of the newspaper. Remember, this page is very, very important. Not only for your vocabulary or words, but also for your thoughts. When you have read the paper, go to the words you have marked. Note the top 5 to 10 words in a diary. Now pick up your dictionary and find the meaning of these words and write in your diary. Please don't write the meaning in Hindi. Here, one thing you have to keep in mind, that your dictionary has to be a good one. A Webster's dictionary is the best. But if Webster's dictionary is not available, Oxford dictionary is a better alternative. You can also install online dictionaries on your phone. I have given a few links in the description box below. You can get it from there. Start using these words when you think in English. I think by now you must have started thinking in English and you must be finding it a lot more easier, isn't it so? Keep revising your diary time to time and play word games and puzzles. Classic games like Scrabble and Boggle can function as a fun way to expand your English vocabulary. And one last thing, pick up a few words that you think are the most important and write them on a chart paper and put them at a place where you can see them more often. Look at these words every now and then and you will find effortlessly you are adding these words to your vocabulary. You can also buy a small 2x2 whiteboard for this purpose and write your words there. I am sure that these steps will not only increase your vocabulary but will also help you in keeping most of the words in your active memory. Remember, अपने पहले एपिसोड में हमने इनपुट आउटपुट की बात की थी. By now, you must have realized that reading is another language input which impacts our output, that is speaking and writing. And reading has a rather powerful impact on our writing. So आने वाले कुछ दिनों में हम एक खास कोर्स शुरू करेंगे जिसे करने के बाद आपकी रीडिंग और राइटिंग स्किल्स में एक बड़ा चेंज आएगा, पर उसके लिए अभी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा. बट इन द मीन टाइम you just keep working on the things that we are discussing these days. So आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही, मगर अब बारी आपकी. वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जाएं और आज के वीडियो की जो भी बात आपको सबसे अच्छी लगी वो लिखकर बता दें. और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई कब का वेट कर रहे हो, अब तो बस वो लाल वाला बटन दबा दो. और हाँ, जिन लोगों को अच्छे काम करने में थोड़ा सा ज़्यादा दिलचस्पी है, जल्दी से जल्दी इस वीडियो को शेयर कर डालिए. नानक देव जी कहते थे कि अच्छी चीज़ें चारों तरफ फैलनी चाहिए और देश की तरक्की तभी होगी जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग आगे बढ़ेंगे. ये एक मिशन है जिसे आगे बढ़ाने में आप सबकी मदद चाहिए. ये एक यज्ञ है जिसमें आपके हाथ की आहुति चाहिए. किसी की लाइफ चेंज होने में केवल कुछ पल लगते हैं, पता नहीं आपका कौन सा शेयर किसकी लाइफ बदल दे. सो जल्दी से शेयर कीजिए. फॉर एनी क्वेरीज यू कैन मेल मी एट successcafe007@gmail.com और व्हाट्सएप मी एट 9910237546 and all your genuine queries will be responded. See you in the next episode. Bye bye and take good care of yourself.